Let us continue with our chapter service costing. Take question number 24. Yesterday we have completed costing of hotels and lodges. Now we are going for question number 24, where we are going to study costing for hospitals. There is only one question about costing for hospitals. So we are doing that question. Let us read question 24. ABC Hospital runs a critical care unit in a hired building. The critical care unit consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. Rent per month rupees 75,000. Supervisors 2 persons 25,000 per month each. Nurses 4 persons rupees 20,000 per month each. Ward boys 4 persons 5,000 per month each. Doctors are paid rupees 2,50,000 per month. Other expenses for the year are as follows: repairs 81,000, food to patients rupees 8,80,000, other services to patients 3 lakhs, laundry charges, medicines, other expenses, administration expenses allocated 10 lakhs. It was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied, and for 80 days only 25 beds are occupied. The hospital hired 750 beds at a charge of rupees 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. You are required to calculate profit per patient day. If the hospital recovers on an average rupees 2,000 per day from each patient. यहीं से स्टार्ट करते हैं. What is this 2,000 rupees that the hospital is recovering from patient? This 2,000 rupees hospital के लिए क्या है? Profit, revenue. Any patient who is getting admitted in the hospital, तो hospital का charges क्या है? What is that 2,000? 2,000 per what? Per patient per day. So when we say per patient per day, so what has this chapter taught us? That per patient per day matlab, can we say it is per what? We can call it as patient day. When we say rupees 2,000 per day from each patient, मतलब हम ये बोल सकते हैं obviously 2,000 rupees per day from each patient. Then हम लोग बोल सकते हैं कि this 2,000 rupees is per day from each patient, मतलब it is per patient day, or it is called as bed day. Patient day and bed day is one and the same. एक बेड पे एक ही पेशेंट होएगा, तो patient day and bed days are one and the same.
ये लोग ने 2 बार वर्ड यूज किया है, अगर आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में तो यहाँ पे भी वो लोग ने यूज किया है, इट इज 100 रुपीज per bed per day. Second time that they've used is here. They want us to calculate profit what? Per patient day. Yesterday when we did costing for hotels and lodges, तब हम लोग ने क्या यूज किया था? Room days. If you remember, yesterday we calculated something called as what? Room days. तो वैसे ही हॉस्पिटल्स के लिए इट इज पेशेंट डेज. फॉर हॉस्पिटल्स वी कैन से इनके लिए यूनिट इज पेशेंट डेज. पेशेंट डेज एंड बेड डेज इज वन एंड द सेम. चलो अभी मुझे पूरे क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है हाउ मच इज पेशेंट डेज. दिस इज व्हाट हमको ढूंढना है, पेशेंट डेज और बेड डेज. सो कहीं पे तो क्वेश्चन में, चलो मैं मार्क करता हूं, यू जस्ट रीड दैट इंफॉर्मेशन. बाकी सब इंफॉर्मेशन अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है. रीड दिस 2 lines and read this 5 lines. Baki sab information don't read right now, only read the first 2 lines of the question and ये 5 line, because ये सब से हमको बेड डेज या पेशेंट डेज मिलेगा. हाउ टू कैलकुलेट पेशेंट डेज. वो सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करने के लिए, उसके लिए हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए. व्हाट आर द 2 इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर इफ आई वांट टू कैलकुलेट पेशेंट डेज. लाइक येस्टरडे वी कैलकुलेटेड रूम डेज. सो रूम डेज के लिए हम लोग को 2 इंफॉर्मेशन चाहिए था. क्या 2 इंफॉर्मेशन हमको चाहिए था? सबसे पहले नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट वी वांट इज नंबर ऑफ डेज. तो वैसे ही पेशेंट डेज या बेड डेज के लिए हमको क्या 2 इंफॉर्मेशन चाहिए? नंबर ऑफ बेड्स occupied and number of beds occupied, और दूसरा चाहिए हमको नंबर ऑफ डेज. ओके, चेक करके बताओ. कैन यू टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग ने तुमको एक्सप्लेन किया है कि हॉस्पिटल के पास देयर इज वन CCU and that CCU consist of 35 beds. Consist of 35 beds मतलब क्या? Already वो CCU के अंदर 35 beds हैं and they are saying 5 more beds can be added if required. मतलब if necessary हम 5 more beds add कर सकते हैं. We can add 5 more beds. Now coming to this particular line, they have said it is estimated that for 150 days 35 beds are occupied. So very simple, how many beds were occupied for how many days? जैसे हम लोग ने कल किया था, how many rooms were occupied for how many days? So during off season 40 rooms were occupied for 180 days. वैसे ही 80 rooms were occupied for 180 days during season months. वैसे ही इन हॉस्पिटल हाउ मैनी बेड्स वर ऑक्यूपाइड फॉर 150 डेज. तो वो लोग ने हमको बोला है, दे हैव सेड दैट 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स वर ऑक्यूपाइड. सो तुम इतना समझ लो, फॉर 150 डेज वो 35 बेड्स पे कोई ना कोई तो पेशेंट था. 35 बेड्स वर ऑक्यूपाइड फॉर 150 days. However, for remaining 80 days, only how many beds were occupied? 25 beds were occupied. So, with the help of this 2 information, I want to calculate bed days, or I want to calculate bed days, or we want to calculate
पेशेंट डेज, ये दोनों सेम है. We want to calculate bed days or patient days. How to calculate bed days or patient days? We just have to multiply number of beds multiplied by number of days. कल भी हम लोग ने वही किया था, number of rooms multiplied by number of days. तो चलो multiply करो, 35 into 150, 52, okay, multiply 25 into 80, 2000. See, वन कैलकुलेशन आई विल डू, ऐसा मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूं, अगेन आई एम डूइंग एंड एक्सप्लेनिंग. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, वेरी सिंपल. इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, कैन यू टेल मी हॉस्पिटल इज चार्जिंग हाउ मच रुपीज फ्रॉम द पेशेंट? कोई पेशेंट एडमिट होता है तो यू आर चार्जिंग हाउ मच रुपीज? 2000 रुपीज वॉट पर पेशेंट पर डे. सो सपोज कैन यू टेल मी कि ये 150 डेज का रेवेन्यू कितना हुआ? हाउ टू कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर दैट 150 डेज? आई विल मल्टीप्लाई 2000 बाय हाउ मच? पहले तो 2000 इज पर पेशेंट है, तो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई 2000 बाय हाउ मेनी बेड्स? 35, बिकॉज ऑन दैट 35 एवरी टाइम सम पेशेंट वॉज देयर. लेकिन 35 इंटू 2000 करोगे तो वो 1 डे का रेवेन्यू है. बट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर हाउ मेनी डेज? 150 days. So how will I calculate the total revenue? It is 35 beds into 150 days into rupees 2000. So what I am doing is I am just multiplying this into this, that is beds into days. So that's why, or that's how we get बेड डेज. तो ये बेड डेज हमको मिल गया है, तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ 35 into 150 आई कैन राइट 5250 here. Likewise, now I want to calculate revenue for this 80 days. So if I want to calculate revenue for this 80 days, 25 beds were occupied for 80 days. And our charges are rupees 2000 per patient per day. So we are multiplying this by not only number of patients, but we are also multiplying this by number of days. So हम क्या कर रहे हैं कि what we are doing, we are just multiplying this 25 into 80, that is 2000. Okay, now listen carefully. First of all, this is the revenue that the hospital has got from its own beds. Hospital has got revenue from its own beds, but there were few days, there were few times, there were time where hospital has hired some beds. Yes or no? So can you check और मुझे बताओ कि hospital had hired how many beds? 750 beds. 750 beds hospital had hired. रीड फर्स्ट 2 लाइन्स. लेकिन उधर तो ऐसा बोला है दे कैन हायर 5 more beds, or rather they can add 5 more beds if required. So at a time only how many beds can be added? 5. So how did hospital hire 750 beds? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एट अ टाइम हॉस्पिटल कैन हायर हाउ मेनी बेड्स? ओनली 5 बेड्स. सो हाउ डिड इट हायर 750 बेड्स? सॉरी, no, there is only one CCU. They have not mentioned there are more than one CCU. Suppose this is the CCU. ये benches नहीं है, ये beds है, तो ये 35 बेड्स है. अब एट अ टाइम आई कैन ऐड ओनली 5 more बेड्स. सो हाउ डिड इट हायर? अच्छा, बाय द वे 5 more बेड्स जो है वो हायर करना पड़ता है, वो हॉस्पिटल का खुद का नहीं है. सो इट हैज़ टू बी हायर्ड फ्रॉम सम आउटसाइड एजेंसी फॉर विच हॉस्पिटल इज ऑल्सो पेइंग हायर चार्जेस ऑफ 100 रुपीज पर बेड पर डे. हायर चार्जेस मतलब समझता है
भाड़े पे लिया है, सो 100 रुपीज का वी हैव टू पे हायर चार्जेस एज हॉस्पिटल. आई हैव टू हायर द बेड्स फ्रॉम सम एजेंसी फॉर विच आई हैव टू पे 100 रुपीज पर बेड पर डे. सो एट अ टाइम आई कैन ऐड ओनली 5 more बेड्स. ऐसा मैंने क्वेश्चन ही बोल रहा है. एंड इनफैक्ट दे हैव ऑल्सो रिटर्न, आगे भी पढ़ो, here they have said that 750 beds were hired to accommodate the flow of patients. And read the statement further. This does not exceed more than 5 extra beds over and above normal capacity of 35 beds on any given day. So on any given day हॉस्पिटल ने 5 से ज़्यादा बेड तो लगाया नहीं है सीसीयू में. सो माय क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हायर 750 बेड्स. मतलब यू कैन से कि 750 बेड्स जो लोग ने हायर किया है इज नॉट इन वन डे. Yes or no? So 750 beds they have not hired in one day. What does that mean? Suppose थोड़ी देर के लिए हम assume कर लेते हैं कि वो लोग ने 5 beds hire किया. So like this 5 beds, 5 beds, 5 beds, 5 beds, 5 beds. Like this 5 beds, 5 beds, 5 beds वो लोग ने कितने days के लिए hire किया होगा? तो can we say 750 is bed days only? Yes or no? 750 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बेड्स है कि डेज है? बेड डेज ही है. ओके, नाउ लिसन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. वो 750 बेड डेज है, मतलब जो इसने मैथमेटिक्स समझाया, ही इज सेइंग दैट लेट अस अज्यूम दैट 5 बेड्स वर एडेड. सो एट अ टाइम हॉस्पिटल कैन ऐड ओनली 5 एक्स्ट्रा बेड्स इन दैट सीसीयू. सीसीयू भी एक रूम रहेगा ना, एक रूम रहेगा, ग्राउंड थोड़ी है कि ग्राउंड में 35 बेड रखा है ना, उसमें जितने बेड चाहिए उतने हायर कर सकते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर रूम, देयर इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसके अंदर देयर आर ऑलरेडी 35 बेड्स एंड 5 more बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड. एंड एट अ टाइम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट एक्सीडेड मोर देन 5 बेड्स over and above normal capacity of 35 beds. That means even if we assume कि वो लोग ने 5 बेड्स लगाए हैं, like this 5 बेड्स, 5 बेड्स, 5 बेड्स, 5 बेड्स, 5 बेड्स, they must have hired 5 beds for 150 days. That is how we get 750. Okay, so now my question is, वो 5 beds पे भी तो patient है. You have admitted the patients to accommodate the flow of patients. मतलब मेरे पास जो 35 बेड्स है वो कम पड़ रहा है, तो वो 35 बेड्स कम पड़ रहे हैं तो मैंने एक्स्ट्रा 5 बेड लगाए. ऐसा मैंने 5 बेड्स, 5 बेड्स, 5 बेड्स I have hired like this for 150 days assuming. Now will you charge from the patient who are admitted in the CCU? वो 5 बेड पे जो पेशेंट बैठे हैं उनसे भी तो तुम चार्जेस लोगे 2000 रुपीज. अच्छा, पेशेंट को थोड़ी मालूम रहेगा कि ये भाड़े का बेड है कि हॉस्पिटल का बेड है, तो यू विल चार्ज 2000 फ्रॉम देम ऑल्सो. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम देम, so how will I calculate revenue from them? Same calculation, it is 5 beds into 150 days into 2000. See, एक काम करो, ये सब कैलकुलेट करके गिव मी द टोटल. मल्टीप्लाई एंड गिव मी द टोटल. आई एम इंटरेस्टेड इन टोटल, नॉट इंडिविजुअल. यहां पे टोटल रेवेन्यू चाहिए. बोलो कितना आया? 1,60 lakhs. This is the total revenue that the hospital has earned for the entire year. What is easier way of calculating? अब ये सब bed days का total करो. 5250 plus 2000 plus 750. How much is the total? What is the total? 8000. तो can I say आप ये revenue calculate कर रहे हो 8000 bed days into 2000. ऐसा करो तो भी आपको यही आंसर आएगा, दैट इज 1,60 lakhs.
So what we will follow is this procedure. And anyways, I have to calculate this 8,000 because see what they're asking us in the question. वो लोग ने हमको question में क्या calculate करने के लिए बोला है? They are asking us to calculate profit per what? तो उसके लिए मुझे patient days तो चाहिए. So how many total patient days during the entire year? 8,000. Write down. Point number 1. Calculation of patient days. Calculation of patient days slash bed days. Calculation of patient days slash bed days for the year. Next line equal to, अच्छा don't write like this, हम लोग equation form में लिखेंगे. So what you can do is directly next line is equal to 35 beds into 180 days, sorry 150 days, next plus 25 beds into 80 days, and last, for last one we can directly write plus 750. by हम लोग directly 750 लिख रहे हैं क्योंकि 750 is already bed days only. So this is 5250 plus 2000 plus 750. So this is 8,000 patient days or bed days. ओके एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, statement showing calculation of profit per patient day. चलो एक टेबल बनाओ, सीरियल नंबर, particulars, calculation, rupees. रिमेनिंग पेज के लिए बना दो. राइट डाउन सीरियल नंबर 1, टोटल रेवेन्यू. ओके यू कैन सी हियर हम लोग ने टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया हुआ है. जस्ट मल्टीप्लाई व्हाट इनटू व्हाट, 8,000 पेशेंट डेज
into rupees 2000. 1,60,00,000. एक लाइन छोड़ के लिखो टोटल कॉस्ट, इसको अंडरलाइन करो. ओके, टेल मी टोटल कॉस्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर व्हाट टाइम पीरियड. पूरा ईयर ना, क्योंकि ये रेवेन्यू जो है वो पूरे साल का है. सो टोटल कॉस्ट चेक करो लिस्ट में, विच इज द फर्स्ट कॉस्ट, रेंट. बट रेंट विच इज गिवन इज पर month, we want per year. Yeah, for the year. Write down next line rent, go on writing next line rent. Okay, come to calculation column. Bolo, what is the calculation you will write there? 75,000 into 12. 9 lakhs. So next, after rent, next one is supervisor. Okay, now this is salary to supervisor. So write down next line salary to supervisor. Bolo, how will you calculate? We want calculation. It is how much into how much into how much. Salary is 25,000 per month. लेकिन ये 25,000 जो per month है वो one supervisor का है. Likewise there are two supervisors and it is per month. So it is how much into how much into how much. Yes, 25,000 into 2 persons or 12 into 2 persons. Rent amount is 9 lakh. What is the amount of salary to supervisors? Okay. Salary to nurses. Okay. Next, ward boys. 2 lakh 40. So next, doctors. Doctors are paid 2 lakh 50,000 per month. We want for 1 year. So 2 lakh 50,000 into 12, 30 lakhs. So next, I think other expenses are already for the year. So you just have to copy this one below the other. So continue copying. Repairs, food to patients. Repairs 81,000. Food to patients. So next, laundry charges, medicines, other expenses, administration expenses allocated. Total cost का total मत करो. There is one more cost, which is that. वो ही cost तो main है. हायर चार्जेस, वो 750 बेड हायर चार्जेस है ना. हायर किया उसको, चोरी करके थोड़ी लेके आए. देखो हायर चार्जेस.
higher charges of beds, higher charges of beds. Bolo, what is the calculation for higher charges of beds? Higher charges of beds is rupees 100 per bed per day. So this should be multiplied by how many bed days? 750. So calculation column is 750 bed days into rupees 100. That is 75,000. Abhi total karo. So you will get 74 lakhs wrong hai. 1 crore 4 lakhs 66,000 is correct. 1 crore 4 lakhs 66,000, that is your total cost. चलो एक लाइन छोड़ के लिखो सीरियल नंबर 3, that is profit. Profit will be revenue minus cost. 1 minus 2 minus करो. बोलो कितना? 50 24 44,000 55 lakhs 34. चलो next number 4. They don't want profit, they want profit per patient day. So, number 4, profit per patient day. तो कोई बताओ कि we have to divide 5,34,000 by how many patient days? 8,000. So that is serial number 3 divided by 8,000 patient days. $691.75. चलो खत्म हो गया. कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स इज ओवर. ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में भी पूछा था. इंटर क्या? Okay, now we are going for costing of toll roads, yeah, toll booths. Take question number 34. Sure. Question number 34. दो क्वेश्चन है कॉस्टिंग फॉर टोल रोड्स पे. एक है क्वेश्चन 34 and there is one more question. We will see that. First I am reading question 34. BHG Toll Plaza Limited built a 60-kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway. The company has estimated that a total of 12 crore vehicles only of single type will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. Toll operating and maintenance cost for the month of April 2020 are as follows. Salary to collection personnel 3 shifts, 4 persons per shift, 550 per day per person. Supervisor 2 shifts and 1 person per shift, 750 per day per person. Likewise security personnel, likewise toll booth manager. Electricity, telephone maintenance cost
Monthly depreciation and amortization expenses will be 1.5 crores. Further, company will need 25% profit over total cost to cover interest and other costs. You are required to calculate cost per kilometer per month, and you are required to calculate the toll rate per vehicle. ओके फिलहाल रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 को स्टिक करो. यू आर सपोज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ. ये कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ का न्यूमरेटर क्या आएगा वो बताओ. टोटल कॉस्ट. लेकिन टोटल कॉस्ट क्या? अरे भाई टोटल कॉस्ट क्या मतलब? टोटल कॉस्ट वी वांट फॉर 1 मंथ, 6 मंथ्स, क्वार्टर, पूरा साल. किसके लिए ढूंढोगे? फॉर अ मंथ. ठीक है. और एनीवे सब तुमको फॉर अ मंथ ही दिया हुआ है. तो राइट डाउन. चलो वी आर स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1. ओके वी आर स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1. उसके अंदर यू कैन राइट ए स्टेटमेंट शोइंग calculation of statement showing calculation of total cost for the month. Statement showing calculation of total cost for the month of April 2020. Okay, prepare one table. Particulars, we don't want serial number. Particulars बनाओ. Calculation एंड रुपीस. ये रुपीस कॉलम को जितना जगह चाहिए उसको निकाल दो. रिमेनिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मतलब पर्टिकुलर्स एंड कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम साइज. चलो स्टार्ट. बोलो विच इज द फर्स्ट कॉस्ट? सैलरी टू. हाँ तो तुम लोग भी ऐसे ही लिखो. पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखो सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनेल. ओके कैलकुलेशन कॉलम में क्या लिखने का दैट आई विल टेल यू लेटर. फर्स्ट टेल मी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ हाउ मच इज सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनेल. do the calculation on calculator and tell me how much is salary to collection personnel. अरे इधर रुपीस कॉलम में कितना लिखूं वो बताओ यार. तो सबको ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है. 1,98,000. कैसे आया 1,98,000? प्लीज एक्सप्लेन.
How many shifts per day? 3 shifts. 3 shifts multiplied by how many persons per shift? 4 persons per shift. हाँ, ऐसा दिन में 3 शिफ्ट होता है, तो 3 शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 persons पर शिफ्ट. बोलो इनटू व्हाट? 550 per day per person. तो it is per day per person, actually it is 12 persons into 550. तो ये जो अमाउंट आया, I hope you understand and agree, it is salary per day. So this will be multiplied by how many days? किधर दिया 30 days? Yes, because it is month of what? April. That is why this will be multiplied by 30. अब ये पूरा calculation you have to write it in calculation columns. So write down. Calculation columns में write down 3 shifts into 4 persons into rupees 550 into 30 days. 3 shifts into 4 persons into 4 persons into rupees 550 into 30 days. Bolo, that was 1,98,000. Likewise, do it for others. Likewise, do for salary to supervisor, salary to security personnel and salary to toll booth manager. चलो बाकी का cost तुम ऐसे ही लिख सकते हो, electricity, telephone, maintenance cost, and last one is depreciation and amortization expenses. You can write till there. Last one will be depreciation and amortization expenses. Chalo, what is the total cost? 1 crore 94 lakhs 80,000. Okay. 1 crore 94 lakhs 80,000. Correct. Now we have not yet completed first requirement part. Now it is very simple. They are only asking us to calculate cost per kilometer per month. So हम लोग के पास cost per month तो है. What is the total cost that you have calculated? 1 crore 94 lakh 80,000. तो टेबल खत्म हो गया है. टेबल खत्म होने के बाद पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट पर किलोमीटर per month. So this is simple, is equal to, bolo, what is the numerator? 1 crore 94 lakh 80,000. This will be divided by how many kilometers? This will be divided by how many kilometers? अरे वो हाईवे कितना किलोमीटर्स का है? 60 किलोमीटर्स. सो डिवाइड बाय 60 किलोमीटर्स. बोलो कितना? 3,24,666.67. Okay. Okay, read the second requirement part. That is more interesting. Second requirement part में बोल रहा है calculate the toll rate per vehicle. How to calculate this toll rate per vehicle? Obviously, जो vehicles
टोल से क्रॉस होंगे उनके पास से we will not recover only cost, no? From them we will also recover profit. So somewhere they have given you profit percentage. How much is the profit percentage that they have given? 25% over total cost. So let us calculate the toll rate per vehicle. So write down, we are going for second requirement part, calculation of toll rate per vehicle. Okay, now in that first we will calculate, write down calculation of, पहले हम total toll calculate करते हैं. How much is the total toll that we want to collect in the entire year or in the entire month, sorry. Write down calculation of total toll to be collected for the month या per month. Calculation of total toll to be collected per month. और 3 लाइन का टेबल चाहिए. Particulars rupees. Total cost which you have already found out, 1 crore 94 lakhs 80,000. ये टोटल कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट. सो नेक्स्ट लाइन प्लस प्रॉफिट. बोलो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 25% ऑन व्हाट? हाउ मच इज टोटल कॉस्ट? तो तुम्हारे सामने है. इसको हम बोल सकते हैं 25% ऑन कॉस्ट. करो इसका 25%. कितना? 23 lakhs 70,000. ये प्रॉफिट है. प्रॉफिट इज 48 लाख 70,000. ओके चलो ऐड करो इसको. टोटल टोल we will get to be collected per month. बोलो इसका टोटल बोलो. 2 lakhs नहीं है वो 2 करोड़ है. 2 crores 33 lakhs 2 crore 43 lakhs 50,000. What is this 2 crore 43 lakh 50,000? देखो उसके सामने लिखा है. What is that? Total toll to be collected per month. How will I convert this into per vehicle? क्योंकि हम लोग को तो per vehicle में convert करना पड़ेगा. Divided by number of vehicles. देखो first paragraph में they have given number of vehicles 12 crore. So divide कर दो इसको 12 करोड़ से. हाँ तो मुझे तो पता ही है, तुम तो कर भी रहे हो. Can I divide it by 12 crores? No. Why no? Because this 12 crores is total number of vehicles that is going to pass. Okay. So this toll that we are collecting is for a month. So एक लाइन छोड़ के लिखो B. Calculation of number of vehicles. Calculation of number of vehicles using the highway per month. Calculation of number of vehicles using the highway per month. Next line equal to, चलो it is mathematics. Total of 12 crore vehicles बोल रहे हैं during the 10 years toll collection period. I want for 1 month. How will I calculate? पहले तो 12 crores को डिवाइड बाय क्या करोगे? 10. So next line is equal to
नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 12 crores divided by 10 years into 12 months. यानी 12 crores divided by 10 आपको आंसर जो आया वो क्या है फॉर 1 year. हमको क्या चाहिए 1 month, तो into 1/12. How many vehicles? Correct. 10 lakhs. 10 lakh vehicles per month. Now, point number C. Toll rate per vehicle. Toll rate per vehicle is equal to 2,43,50,000 divided by 10 lakhs. So that is end of this question. That was on toll plaza. There is one more question on toll plaza which is a better question as compared to this one. तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. Come to question number 18 पे नंबर 118. So try to read the question. I will also read the question. You try to read the question. This question also is for toll plaza. SLS infrastructure built and operates a 110 kilometer highway on the basis of built, operate, transfer, BOT. What is built, operate, transfer? Very simple. गवर्नमेंट क्या करता है, वो सब जगह गवर्नमेंट खुद नहीं पहुंच सकता है, तो वो लोग कंपनी को पकड़ते हैं और बोलते हैं यू कंस्ट्रक्ट द रोड, मीन्स यू बिल्ड द रोड. नाउ व्हेन यू बिल्ड द रोड, ऑब्वियसली द कंपनी विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन बिल्डिंग द रोड. क्या क्या कॉस्ट इनकर होता है, दे हैव गिवन. सी हियर ऑल दीज 9 कॉस्ट 1 to 9, दीज ऑल कॉस्ट कंपनी विल हैव टू स्पेंड. देन गवर्नमेंट क्या बोलेगा, व्हाट यू डू इज यू बिल्ड एंड देन यू, वहां पे तुम एक टोल प्लाजा रखो and you operate that toll plaza, means you collect toll from the passing vehicles. मतलब government gives this authority to whom? To the company who has built the road. And then after some number of years, here you can see that is 25 years. This 25 years is called as concession period. Concession period means government बोलेगा for 25 years you operate the toll, you collect the toll and you cover or recover your investment. जो तुमने खर्चा किया है वो 25 साल में तुम रिकवर करो. And after 25 years you will transfer this to the government. So that is built, operate, transfer. Anyways, right now we are interested in this 25 years. What is this 25 years in this question called as concession period? वो नीचे लास्ट में वो लोग ने डिफाइन भी किया. You can read concession period का definition. Concession period is a period for which an infrastructure company rather is allowed to operate and recover its investment. So you will be allowed to operate that toll plaza, you will be allowed to recover toll from the passing vehicles, but after certain number of years, in this question 25 years, तुमको ये toll plaza transfer करना पड़ेगा to the government. Now it is up to the government whether they want to continue collecting the toll or whether they want to make that road toll free. तो आप कभी भी जाओगे ना तो वहाँ पे ना पूरा इन्वेस्टमेंट का वो लोग है ना ये लगाते हैं, एलईडी का एक पूरा बैनर रहता है. कभी पढ़ना, टोल प्लाजा क्लॉज करोगे इफ एट ऑल यू गेट अ चांस, कि टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कॉस्ट इनकर्ड,
तो पूरा ये कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा लगा है एक्सेट्रा, वो सब वो लोग कैलकुलेशन देते हैं वहाँ पे. एनीवेज, राइट नाउ our interest area is this 25 years. Now a traffic assessment was carried out to estimate the traffic flow per day. This is the traffic flow per day. That means they have estimated that 44,200 two-wheelers will pass through that toll plaza in one day. 3450 car and SUVs will pass through that toll plaza in one day. Likewise 1800 bus and LCV is light commercial vehicles, and heavy commercial vehicles 816. Then following is the estimated cost of the project. तो ये सब cost incur होगा. I hope you have read कि ये सब जो है वो rupees in lakhs है. So 1,14,495.25 lakhs. Anyways, an estimated cost of rupees 1120 lakhs has to be incurred on administration of toll plaza operation on the basis of the vehicle specification, that is weight, size, time saving, etc. The following weights have been assigned to the passing vehicles. Type of vehicle: two-wheeler 5%, cars and SUV 20%, bus and LCV 30%, and heavy commercial vehicles 45%. What is this? We will use this later in the question. First part is very simple, in which they are only asking you to calculate total project cost, but they are not asking you to calculate the total project cost for the lifetime of the project. They are asking you to calculate the total project cost per day of the concession period. So इसको per day में कैसे convert करने का? It is simple mathematics. First of all, forget about per day. पहले ये बोलो how much is total cost. पहले टोटल कॉस्ट ढूंढते हैं हम लोग. सो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1,1495.25 lakhs. Apart from this, they are also going to incur an cost of rupees on administration and toll plaza operation. तो इसके अंदर just you have to add 1120 lakhs. ये दोनों का टोटल करो कितना होता है? 1,14,495.25 प्लस 1120, बोलो कितना होता है? 1156.15.25 lakhs. This is going to be, we can say, the project cost, or this is going to be the total cost. ये पूरा cost we have to convert into per day of concession period. So how to convert this into per day of concession period? So for that, next question is how much is concession period? 25 years. लेकिन मेरे को years में नहीं, मेरे को days में चाहिए. So how will I convert 25 years into days? 25 multiplied by 365. तो इसको calculate करो. बोलो व्हाट इज आंसर? ये 25 इंटू 365 कितना होता है? 25. डिवाइड करो. यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 12.67 lakhs. So this is the answer of requirement part number 1. Write down. Point number 1. Statement showing calculation of यही लिखना है, total project cost per day of concession period. Total cost or total project cost per day
of concession period. Okay, next line. Serial number, particulars, calculation. Last, we want one column, but don't give any heading. So write down serial number 1, total cost, bracket, write down rupees in lakhs. नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 114,495.25. and next line write down administration and toll plaza operation cost. Administration and toll plaza operation cost. चलो ये हो गया टोटल कॉस्ट. सीरियल नंबर 2 कंसेशन पीरियड. $25 into 365. Concession period, bracket write down in days. 9125. Serial number 3 total project cost, sorry not total project cost per day of concession period. ब्रैकेट में लिखो रुपीज 1 डिवाइड बाय 2 और यू कैन राइट रुपीज इन लैक्स. is rupees 12.67. Okay, now second part is more interesting. जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, अगेन इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट टोल फी टू बी चार्ज्ड. लास्ट क्वेश्चन में भी तुमको वही कैलकुलेट करने के लिए बोला था. लास्ट क्वेश्चन अगर चाहिए तो चेक करो, दैट वी सॉल्व इन दिस टोल प्लाजा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में भी दे आर आस्क्ड अस टू कैलकुलेट टोल रेट पर व्हीकल. बट लास्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन में देयर वाज ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल विच वाज क्रॉसिंग द टोल प्लाजा. एक ही टाइप, वेरी रेयर सिचुएशन, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि खाली एक ही व्हीकल टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा है. हाउएवर इन प्रैक्टिकली there are lot of vehicles crossing the toll plaza. Of course all vehicles are not of the same type, so different types of vehicles have been crossing the toll plaza per day. Because ये जो तुमको दिया गया है, 2 व्हीलर्स,
cars and SUV, bus and light commercial vehicles, heavy commercial vehicles. These are the number of vehicles that are going to cross through the toll plaza per day. Now वो लोग तुमको अगेन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेट द टोल फी टू बी चार्ज्ड for per vehicle of each type, and the company wants to earn a profit of 15% of total cost. Just now तुमने total cost find out किया हुआ है. The total cost that you have found out is 12,67,000. But this 12,67,000 that we have found out, ये 12,67,000 is total cost per what? Day. So total cost per day is 12,67,000. In this, company wants a profit of 15%. तो करो कितना होता है? 12,67,000 into 15%. बोलो कितना? 1,90,050. टोटल टोल फी कलेक्टेड पर डे कितना होता है? ये 14 lakhs 57,050. Can we say this to 14,57,050 is total toll fee collected from all vehicles per day? मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितने भी व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, टोटल टोल फी कलेक्शन शुड बी 14,57,050 पर डे. पहले ये लिखो, राइट डाउन. पॉइंट नंबर 2. वी आर स्टार्टिंग विद सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट. इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टोल फी कलेक्टेड per day. Okay, now देखो, compare this with the previous question. We have almost done, or we have started the same way. We calculated total toll fee. Of course, यहाँ पे it was per month. In this question, we have done it at per day. Now, last question में हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने ये जो टोटल टोल फी कलेक्टेड है 2,43,50,000, उसको डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मंथ. सो माय क्वेश्चन इज, कैन वी इन दिस क्वेश्चन डिवाइड दिस 14,57,050 बाय डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स using the road per day? मतलब just we can total this 44,500, 3,450, 1,800, 816, whatever is the total. Can we just divide this 14,57,050 divided by number of vehicles per day and say this is the toll fee per vehicle? No, in this question ऐसा हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Why we cannot do it like this? Because is the company charging same toll from each type of vehicle? No, because of that table which is given in the question, this table is important which is given in the question. तो ये वाला table वो लोग क्या बोल रहे हैं? On the basis of vehicle specifications, that is weight, size, time saving, etc., following weights have been assigned. Two-wheelers 5%, cars and SUVs 20%, bus and LCV 30%, heavy commercial vehicles 45%. So these are the weights that are assigned. So my question to you is, how should we use these weights? Total toll fee, मतलब one recommendation is
14,57,000. This is total toll fee per day. So total toll fee per day, two-wheelers, one recommendation is two-wheelers का weight is 5%, मतलब 14,57,050 into 5%. Just do how much? 72,000.5. तो ये आ गया 72, मतलब एक टू व्हीलर से तुम 72,852.5 का टोल लोगे, divided by number of two wheelers. Okay, so divide this by number of two wheelers. How many number of two wheelers? बोलो कितना आता? कितना? 1.63. This is one recommendation. Is this correct? अरे पहले ये करेक्ट है कि नहीं वो बताओ ना, बाद में दूसरा मेथड करेंगे हम लोग. इज दिस करेक्ट? यस. ओके, सो सम हैव एक्सेप्टेड. बोला ये बरोबर. नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस 5%, 20%, 30% एंड 45%? हाँ, मतलब ये जो 14,57,000 है, as per this recommendation should be distributed in this ratio. Yes or no? This is method number 1 or recommendation number 1. Okay, recommendation number 2 I am giving. See whether you like this recommendation. This 5%, 20%, 30%, 45% which is given, forget about percentage for the time being, just ignore this percentage. 5, 20, 30, 45, is this the ratio of toll fee to be charged from every vehicle per day? मतलब, to explain what I said, for example, if you are charging toll fee of 5 rupees from one two-wheeler, so you are charging 20 rupees toll fee from one car and SUV. ये जो 5, 20, 30 and 45 जो तुमको दिया हुआ है, this 5, 20, you forget about percentage, 5, 20, 30 and 45, ये जो तुमको दिया हुआ है, ये किसका रेशियो है? This is ratio of toll fee five, 20, 30, 45. I repeat, 5, 20, 30, 45 is the ratio of toll fee per vehicle. Means one two-wheeler से whatever, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लास्ट में आंसर, ये जो आंसर है ना, टोल फी should be in this ratio 5:20:30:45 पर व्हीकल. टोल फी का रेशियो है ये 5, 20, 30 and 45. Those who understand mathematics, one two wheeler से if you are charging toll fee of 5x, तो one bus and
sorry, one car and SUV say you are charging toll fee of 20x. So from one bus and LCV you are charging toll fee of 30x, and therefore एक heavy commercial vehicle से you are charging toll fee of 45x. पर vehicle का रेशियो है ये. ओके, सो अगर एक टू व्हीलर से वन टू व्हीलर फ्रॉम वन टू व्हीलर इफ वी आर चार्जिंग टोल फी ऑफ 5x, so from 44,500 two wheelers we will charge 44,500 into 5x. yes or no? तो करो मल्टीप्लाई 44,500 into 5x. पहले मैथमेटिक्स समझाऊंगा. बोलो हाउ मच? 2,22,500x. Can we say this is total toll fee collected from two wheelers? Total toll fee collected from two wheelers per day. एक टू व्हीलर से we are collecting toll fee of 5x. तो 44,500 टू व्हीलर से we will collect 2,22,500x. एक कार एंड SUV से we are collecting toll of 20x. So total 3,450 cars and SUV. So we will collect toll fee of 69,000x. Next is bus and LCV. Bus and LCV, one bus मतलब एक बस तुम्हारे टोल से जाएगा, you are charging 30x. So total how many bus and LCV are expected to pass per day? 1800. So multiply 1800 into 30, 54,000x. चलो next, heavy commercial vehicle 816 है ना, multiply 816 into 45, 36, 720x. This is total toll fee per day. अब मुझे बताओ this plus this plus this plus this, ये सब का जो टोटल है इसको तुम किससे इक्वेट कर सकते हो? This is total toll fee per day. So total toll fee per day is 14,57,050. तो ये सब का टोटल दो पहले, 2,22,500x. कितना था? 2,000. नो, कुछ भी है, यूज कैलकुलेटर. ये सब का टोटल दो. 3,02,20. ये बराबर है. दिस विल बी इक्वेटेड विथ व्हाट? 14,57,050. ये सब का टोटल इज इक्वल टू 3,82,220x. दैट इज इक्वल टू 14,57,050. x मत ढूंढो, 5x ढूंढना है मुझे. ठीक है, चलो x ढूंढो. 3 पॉइंट, तो देयरफॉर 5x कितना हो जाएगा? 19 पॉइंट. दिस इज मेथड 1. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट आई डोंट प्रेफर दिस मेथड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी हियर, ये जो 14,57,050 है ना, व्हाट इज दिस 14,57,050? 14,57,050 यहाँ पे लिखा है मैंने. व्हाट इज दिस 14,57,050? टोटल टोल फी पर डे. Can we say this 14,57,050 should be distributed between the 4 type of vehicles in this ratio? What is this ratio? This is, we can say, total toll fee per day का ratio. ये हर टाइम x लेने का जरूरत नहीं है, x निकाल दो. तो ये टोटल टोल फी का रेशियो है. 2,22,500. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, द टोटल टोल फी कलेक्टेड फ्रॉम टू व्हीलर, टोटल टोल फी कलेक्टेड फ्रॉम कार एंड SUV, total toll fee collected from bus and LCV, and total toll fee collected from heavy vehicles are in the ratio of
222,500 is to 69,000 is to 54,000 is to 36,720. अब इसको हम लोग ये रेशियो में ब्रेक करेंगे 14,57,050. सो मल्टीप्लाई ऑन योर कैलकुलेटर 14,57,050 इंटू 222,500 डिवाइडेड बाय, पहले डिवाइड करो बाद में मल्टीप्लाई करना वरना एरर आएगा कैलकुलेटर पे. ये मेरे को आंसर चाहिए. 14,57,050 इंटू 222,500 डिवाइडेड बाय 382,220. एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए मेरे को. 848 185 okay, so 186. Can we say this is total toll fee to be collected from total 44,500 vehicles? Divide करो 8,48,186 divided by 44,500. Yes or no? I have used other mathematics. मैंने क्या किया? I will distribute this in this ratio. इस रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो I will get total toll fee collected from two wheelers. This is total from 44,500 two wheelers. तुम X से करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. That is also correct method. आंसर इस सेम मैंने प्रूव कर दिया. But this is better method or approach to follow in this question. तो आप क्या करो, नंबर ऑफ व्हीकल्स, सेकंड इज वेट्स जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हीकल्स एंड वेट्स को मल्टीप्लाई करो इनटू 3. देखो आप कैसे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली. आई डोंट नो तुम लोगों ने कितना टोल्स देखा है. तो टोल आता है ना, उसके 500 मीटर के पहले ना टोल का पूरा चार्ट लगाते हैं. टू व्हीलर का इतना, बस एंड एसयूवी का, कार एंड एसयूवी का इतना. तो वो जो रेट है ना उसका रेशियो है 5:20:30:40:45. एक कार का इट इज 20, एक बस का इट इज 30, एक हैवी कमर्शियल व्हीकल का 45. सो दैट इज द रेशियो. लेकिन ये जो 14,57,050 है, दिस इज टोटल टोल फी. तो मैंने टोटल टोल फी का रेशियो फाइंड आउट किया. आई एम फाइंडिंग आउट द टोटल टोल फी रेशियो एंड आई एम ब्रेकिंग द टोटल टोल फी इन टोटल टोल फी का रेशियो. तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट द टोटल टोल फी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम टू व्हीलर्स. Then you divide it by number of two wheelers, you will get the answer, same answer, 19.06. Okay, do it for one more. 14,57,050 divided by 382,220 into 69,000. बोलो, give me the exact figure. कितना था? 2,63,033. This is total toll fee to be collected from car and SUV. Okay, so मुझे बताओ पर कार एंड एसयूवी का टोल कितना हो जाएगा? 76.24. यस और नो? कैलकुलेटर पे टाइप करो 19.06 डिवाइड बाय 5 इंटू 20. हो गया ना 5:20. यस और नो? राइट डाउन. Statement showing calculation of toll fee to be charged for per vehicle of each type. Per vehicle of each type.
serial number, particulars, calculation, and then 4 columns, that is one for each type of vehicle. See, again I repeat, अगर आप X लेके करना चाहते हैं, you can still do it, your answer will be same. So likewise calculate for other two types. बस एंड एलसीवी का अमाउंट कितना है? नहीं, यहाँ पे अमाउंट कितना है? 2,05,852 और लास्ट में वी शुड इंश्योर टोटल 14,57,050 आना चाहिए. हैवी कमर्शियल व्हीकल का अमाउंट कितना है? 1,39,979. 9 कैसे हो सकता है? ओके, करेक्ट. 170
171 पॉइंट, तुम चेक कर सकते हो, डिवाइड करो 19.06 डिवाइड बाय 5 into 30, you should get this answer, and 19.06 divided by 5 into 45, you should get this answer. Okay, take question number 17. Question 17 is costing for educational institution. थोड़ा speed रखना वरना question 17 खत्म नहीं होगा. Let us take question 17. AD Higher Secondary School offers courses for 11th and 12th standard in 3 streams, that is arts, commerce and science. The school runs higher secondary classes along with primary and secondary classes, but for accounting purposes, it treats higher secondary as a separate responsibility center. The managing committee of the school wants to revise its fee structure for higher secondary students. The accountant of the school has provided the following details for a year. Teacher's salary, 25 teachers into 35,000 into 12 months. Principal's salary, lab attendant salary, salary to library staff, salary to peons, salary to other staff, examination expenditure, office and administration cost, annual day expenses and sports expenses. In fact, this sub cost they have given you for a year. Other information, standard 11th and 12th and primary and secondary. Number of students दिया है, lab classes दिया है in a year, number of examinations in a year, time spent at library by students per year in hours, time spent by principal for administration in hours and teachers for 11th and 12th standard. ये सब information ये table में दिया हुआ है. One teacher who takes economics for arts stream students also teaches commerce stream students. The teacher takes 1040 classes in a year. It includes 208 classes for commerce students. There is another teacher who teaches mathematics for science stream students, also teaches business mathematics to commerce stream students. She takes 1100 classes in a year. It includes 160 classes for commerce students. One peon is fully dedicated for higher secondary section. Other peons dedicate their 15% of time for higher secondary section. All students, irrespective of section and age, participate in annual function and sports activities. You are required to calculate cost per student per annum. ये हमको calculate करना है. Cost per student per annum for all 3 streams. चलो A part पे पहले focus करते हैं, B and C बाद में होता रहेगा. पहले A part पे focus करते हैं. What is the first part asking you to calculate? Cost per student per annum for 3 streams. My question is, which 3 streams? Arts,
commerce and science. That is what we have to calculate. So how to calculate cost per student per annum? Make some formula. If I want to make some formula, what should be in the numerator and what should be in the denominator? Cost per student per annum चाहिए. तो numerator में क्या होना चाहिए? Total cost होना चाहिए per annum divided by number of students per annum. ठीक है. Number of students. Number of students is already available. Arts, commerce and science number of students is already available with us. Arts में 120 students है, commerce में 360 and science में 180. तो what we have to work is on the numerator. अब न्यूमरेटर में जो मुझे कॉस्ट चाहिए वो कॉस्ट मुझे आर्ट्स का अलग से चाहिए, कॉमर्स का अलग से चाहिए एंड वी वांट फॉर साइंस सेपरेटली. मतलब ये ईच एंड एवरी कॉस्ट को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस. फॉर एग्जांपल टीचर सैलरी, सो टीचर सैलरी वी हैव टू ब्रेक इनटू आर्ट्स कॉमर्स साइंस. प्रिंसिपल सैलरी वो भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू आर्ट्स कॉमर्स साइंस. तो ऐसा टोटल देयर आर 9 कॉस्ट. ऑल दिस 9 कॉस्ट विल हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 3 streams, that is arts, commerce and science. Do you agree with this? ठीक है. So write down. It is advisable to take new page. We will start with requirement part A. Okay, we will start with A part. उसमें लिखो number 1, statement showing calculation of total cost per annum for all 3 streams. चलो ऐसा एक टेबल बनाओ. We don't want serial number, we want particulars, calculation, please keep up the speed वरना ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा. Draw this table for 2 pages.
prepare this table for two pages. एक काम करो, सीरियल नंबर कॉलम छोड़ो, नहीं चाहिए, लेट इट बी. Okay, chalo. Which is the first cost? Teacher's salary. Now I want to find out teacher's salary for each and every stream. How to find out teacher's salary for each and every stream? पूरे स्कूल में टोटल कितने टीचर्स हैं वो हमको दिया हुआ है. How many teachers in the entire school? Do we have breakup of these 25? ये 25 टीचर्स का ब्रेकअप है हमारे पास. Yes, it is given on next page. You can see number of teachers is 4, 5, 6 and 10. So if you total 4, 5, 6 and 10, so we have total how many teachers? 25. We are interested only in standard 11th and 12th. उसमें भी we are interested in arts, commerce and science. So we want to find out the teacher's salary. So for that we will prepare working note. So go to working note number 1. 2 पेज लगेगा इसको. Leave 2 pages or other. Single page to anyways you have prepared. 1 more page will be required for this table. So go on the 3rd page. Write down workings. Underline that. Next line, number 1. Teacher's salary. वर्किंग नोट के अंदर ये टेबल बनाओ. बोलो, how many number of teachers in arts, commerce and science respectively? 4, 5, 6. How much is salary per teacher per annum? Per annum. So it is 35,000 into 12. 4,20,000. Of course, this is for each teacher. So we will get teacher's salary per annum
by multiplying serial number 1 into 2. Okay, multiply. बोलो फटाफट. Tell me how much. 16,80,000 for arts. Next, commerce. 21 lakhs. Science. 25 lakh 20,000. ये अमाउंट्स ऊपर मेन टेबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो गो टू मेन टेबल. मेन टेबल में राइट डाउन 16,20,000. सॉरी से कितना है? 16,80,000. 21 lakhs. 25,20,000. ये कहाँ से मिला हमको? नोट 1. ये तीनों का टोटल करो. 16,80,000 plus 21 lakhs plus 25,20,000. What is the total? 65 lakh कितना? 63 lakh. ओके, नाउ ये जो टीचर्स सैलरी हम लोग ने लिखा है इन ऑल 3 कॉलम्स इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3. तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या लिखा है? वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स also teaches for commerce stream students, and the teacher takes 1040 classes in a year. It includes 208 classes for commerce student. तो ऐसा एक टीचर है who is teaching economics for arts as well as commerce. So right now what we have done is that one teacher, if you see that arts में there are total 4 teachers, वो 4 में से one teacher ऐसा है which is teaching to arts as well as commerce. तो प्रेजेंटली हमने क्या किया है, उसका पूरा सैलरी 4,20,000 आर्ट्स में ले लिया है. यस और नो? तो उसका प्रोपोर्शनेट सैलरी आर्ट्स में से निकाल के कॉमर्स में डालना पड़ेगा. So how will I find out the proportionate salary? The proportionate salary of the economics teacher will be found out on the basis of what? Number of classes that the teacher is taking. So write down. टेबल में जाओ, मेन टेबल में एक लाइन छोड़ के लिखो इकोनॉमिक्स टीचर सैलरी. इसके लिए बनेगा नोट 2. चलो गो टू नोट 2. Write down economics teacher salary. Economics teacher salary. Next line में लिखो for commerce. Okay, चलो for commerce if I want to find out, how will you find out for commerce? How will I find out for commerce? On the basis of what? Number of classes. So पहले तो बोलो इकोनॉमिक्स टीचर और सैलरी का व्हाट इज दैट सैलरी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर? 4,20,000. 4,20,000 is for how many classes? 1040. We want to find out for so 1040 तो 208 के लिए कितना? चलो बोलो कितना था? 80
4,000. ओके, बोलो ये 84,000 कौन से कॉलम से माइनस करेंगे और कौन से कॉलम में ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेयर? आर्ट्स. ऐड इन विच कॉलम? कॉमर्स. सो यहां से माइनस, कॉमर्स में ऐड. एक लाइन छोड़ के सेम वे read next adjustment and calculate for mathematics teacher, because mathematics teacher also is teaching for science and commerce. Note 3, prepare it yourself. Mathematics teacher salary for commerce section कितना था? 61.90. बोलो less from which column, add to which column? Less from science, add in commerce. So with this we have completed first one, that is teacher's salary. Now we go for principal's salary. प्रिंसिपल सैलरी के लिए नोट 4. See, listen carefully, क्योंकि whatever we are discussing for principal salary, same thing we will have to do it for further cost. How much is principal का salary? 14,40,000. Can you tell me principal looks after what? Can we say पूरे principal का एक ही स्कूल है क्या? हाँ, मैंने बोला पूरे प्रिंसिपल का एक ही स्कूल है. पूरे स्कूल का एक ही प्रिंसिपल है. पूरे स्कूल का एक ही प्रिंसिपल है. I want to bifurcate principal salary between arts, commerce and science. तो मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं. पहले I have to bifurcate principal salary between standard 11th 12th and primary and secondary. पहले I have to bifurcate principal salary between primary and secondary. मतलब क्या? Can we say primary and secondary means up to 10th standard and then 11th and 12th standard? मतलब एक स्कूल है जिसमें 12th standard तक है. तो principal is common between primary and secondary and 11th and 12th. So 14,40,000 है ना, उसमें पहले 11th 12th का कितना है, that I have to find out. After I get that out of this 14,40,000 how much is for 11th 12th, then I will bifurcate between arts, commerce and science in step number 2. बराबर है? So my question is, how will you bifurcate principal salary between standard 11th and 12th and primary and secondary? On what basis? Time spent by the principal. So tell me, how much is the total time spent by the principal on standard 11th and 12th? 1,000? 1,000? Exact 1,000?
Okay, how much is the total time spent by the principal? 2400. So out of 2400, 1000 hours is spent by the principal on standard 11 12th. तो पहले I have to find out for standard 11 12. So go to working note. Next line, write down for standard 11th and 12th. 14,40,000 into, bolo how much, divide by how much? 1000 divided by 2400. Okay, how did you get this 1000? How did you get this 2400? उसी के बाजू में ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में you have to show 208 plus 312 plus 480. This divided by 208 plus 312 plus 480 plus 1400. Calculate how much? You know? 6 lakh exact. Okay, can you tell me 6 lakh is principal salary for what? 11 12. Okay, now go on to main table. Main table note 4 के सामने लिखो 6 lakh. Okay, now my next question is, this 6 lakh will be bifurcated between arts, commerce and science in what ratio? वही time ratio only. So यहाँ पे next line write down time spent for administration which is 208 is to 312 is to 480. चलो डिवाइड करो in this ratio 208 is to 312 is to 480. बोलो how much for arts? How much? 124,800. प्लीज सी कौन से लाइन में मैं लिख रहा हूँ. राइट इन द रेशियो वाला लाइन, नॉट 6 लाख वाले लाइन में. बोलो नेक्स्ट. 187 एंड 2,88,000. Principal salary. This is how we have bifurcated. Now जैसे तुमने प्रिंसिपल सैलरी किया है, वेरी सिमिलरली नेक्स्ट 2 करना पड़ेगा लैब अटेंडेंट सैलरी एंड सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ. अगेन आई एम आस्किंग यू टू डू 2 steps because lab attendant salary, first you have to find out how much for 11 12 and then we will bifurcate between arts, commerce and science. So जैसे हम लोग ने प्रिंसिपल सैलरी का नोट बनाया, राइट डाउन नेक्स्ट वन लैब अटेंडेंट सैलरी. And for this we will prepare note 5. Okay, go to note 5. Lab attendance salary for standard 11th and 12th.
Lab attendant salary is 3,60,000. Okay, I just want you to tell me into how much divided by how much. 144 divided by 300. ये 144 एंड 300 कैसे है वो बताना पड़ेगा. So it is 0 plus 0 plus 144 divided by 0 plus 0 plus 144 plus 156. Hello, how much you are getting? 172. Okay. So now go to main table. ये note 5 के बाजू में write down 172,800. Now this 172,800 will be bifurcated between arts, commerce and science in what ratio? Basis क्या है? Lab classes in a year. Zero is to 144. That is dash dash पूरा 172,800 साइंस में जाएगा. आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स डोंट गो टू लेबोरेटरी. चलो ये हो गया लैब क्लासेस या लैब अटेंडेंट सैलरी. नेक्स्ट सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ. सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ खुद से करो. वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियस. पहले 11th 12th का ढूंढो, बाद में मेन टेबल में आके बाइफरकेट करो. सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ. फॉर दैट यू प्रिपेयर नोट 6. Go to note 6. First find out for 11th and 12th. Same, don't change the presentation. जो last note number 4 and 5 में principal salary क्या वैसे ही. Salary to library staff. First मुझे बताओ how much is for 11th 12th. 129. Okay, this will be bifurcated in what ratio? That is what is the basis? Time spent at library. Time spent at library by students per year. And what is the ratio for that? 180 is to 120 is to कितना आता है इसका 50 नहीं 43 200 28 and 57 600. Okay, so salary to library staff is over. Next one is salary to peons. Salary to peons, note 7. Salary to peons will be note 7. So write down note 7. राइट डाउन सैलरी टू प्यून. चलो उसके लिए एक टेबल बनाओ. पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, रुपीस. चेक करो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर सैलरी टू प्यून्स.
नो, कोई इंफॉर्मेशन दिया ना तुम लोग को. One pune is fully dedicated for higher secondary section. So 11th 12th can we say is for higher secondary section. So यहाँ पे one pune is fully dedicated. So can we say one pune का पूरा salary हम यहाँ पे लेंगे. So write down fully dedicated pune. Okay, how much is salary of one pune? वो तो per month है. Into 10,000 into 12 months, which is 1,20,000. What about others? Other pune are also spending 15% time for this section. So other punes का पहले other punes का salary कितना हुआ? 3 punes into 10,000 into 12 months. Will I take full 3,60,000? नहीं, उसका एक कितना 15% करो, कितना होता है 50. $1,74,000 is for standard 11th 12th. So go to main table. Main table में यहाँ पे लिखो 1,74,000. Okay, now main question is 1,74,000 को bifurcate कौन से basis पे करोगे? Equally, no. Number of students is the correct answer. So this will go in number of students. Number of students is 120 is to 360 is to 180. I think this will be in decimals. $31,636. 94,909 and 47,455. Okay, if page is over, go to next page, continue. Which is the next cost? Salary to other staff. चलो सैलरी टू अदर स्टाफ के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नो बेसिस नथिंग, तो क्या करोगे सैलरी टू अदर स्टाफ? Yes, you don't have any other choice. We will have to go for number of students. So लिखो particulars column में salary to other staff what is working note number? Note 8. Okay, now note 8 में जो मैं लिख रहा हूँ ना वो compulsory लिखो, because we will have to use or we may use it in some other working note. Salary to other staff, उसमें लिखो for standard 11 12th how much is total salary to other staff?
4,80,000 will be in the ratio of number of students. So tell me how much divide by how much. अगर नहीं होता है तो यहाँ पे वैसे भी हमको ब्रैकेट तो बनाना ही पड़ेगा. How many total number of students are there in the school? 1500. उसमें से 120, 360 plus 180 divided by 120 plus 360 plus 180, 1112 plus primary and secondary, which is 840. Correct. 1500 students. So 660 upon 1500. So 4,80,000. I think this should be 2,12,200. Sorry, 11,200. अब ये 2,11,200 will be bifurcated in what ratio? Between arts, commerce and science. Right here 2,11,200. बोलो ये कौन से रेशियो में जाएगा? Correct. Number of students, one 20, 360, 180. Just check. 38,400. 115,200. 57,600. Sure. Next one is examination expenditure. Examination expenditure is note number 9. Chalo, go to note 9. Examination expenditure. Again same step. First मुझे examination expenditure ढूंढना पड़ेगा. I have to find out for 11th and 12th standard, and then I will bifurcate between arts, commerce and science. So for standard 11th and 12th, total examination expenditure is 10,80,000 into how many कैसे डिवाइड करोगे एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर को बिटवीन 11th and 12th? Into how much? So that is wrong. That is wrong. Arey, yes. One student will give 2 exam. तो यहाँ पे you have to multiply that 2 by number of students. सब में इक्वल थोड़ी होगा एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर. 120 स्टूडेंट आर्ट्स में है, 360 स्टूडेंट कॉमर्स में है, तो दोनों का एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर सेम थोड़ी होगा. So it is 120. You write this, this is compulsory calculation, into 2 plus 360 into 2 plus 180 into 2. Each student will give 2 exams, divided by 120 into 2 plus 360 into 2 plus 180 into 2 and plus 840 into 2. डायरेक्टली कैलकुलेट मत करो, मुझे ये जो ब्रैकेट का आंसर्स है ना वो आगे यूज करना है. सो यू गिव मी द आंसर्स ऑफ दिस ब्रैकेट्स. 240 plus 720
plus 360 divided by 240 plus 720 plus 360 plus 1680. Okay, one more step. इसका भी टोटल बताओ. 1,08,000 into 13 upon कितना 300. No, it is 3,000. बोलो कितना है. करेक्ट 475. नाउ स्टे हियर एंड मुझे बताओ ये 475 200 आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कौन से रेशियो में जाएगा. 240 720 360 in that ratio. Write down examination expenditure 475 200. No need to write anything, just write the ratio. 240 is to 720 is to 360. $86 400 259 200 129 600. Chalo, last three are very easy. All three will go in what ratio? Office and administration cost, annual day expenses and sports expenses. ये तीनों कौन से रेशियो में जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसका तीनों का नोट हम साथ में बनाएंगे. यू गो देयर साथ में मतलब one below the other. So write down note 10. Now see number of students का already हम लोग ने calculation किया हुआ है. So what you can do is you can directly use this. No need to show this bracket once again. So write down office and administration cost. मैं dictate कर रहा हूँ, लिखो. Office and administration cost. Underline that. Next line write down for 11th and 12th standard. मतलब for standard 11th and 12th equal to 15,20,000 for standard 11th and 12th. 15,20,000 into 660 upon 1500 is equal to how much? 6 lakh. $668,800. Okay, stay there. Working note number 11 लिखो वहाँ पे. Annual day expenses. Underline that. Next line. For standard 11th 12th. For standard 11th and 12th is equal to 4,50,000 into 660 upon 1500. 1,98,000. और उसी के नीचे लिखो नोट नंबर 12. Sports expenses. For standard 11th 12th 1,20,000 into 660 upon 1500. Just check, is it 52,800?
चलो मेन टेबल में आ जाओ. Please verify these figures. Huh? 36,000, 1,08,000, 54,000. Sports expenses is last one. We got 52,800 from note 12. Number of students 120 is to 120 is to 360 is to 180. $9,600. Okay, 28,800. Sure. Now what we will do is we will total for all the 4 columns. सब लोग अलग अलग कॉलम का टोटल करो. सब लोग एक साथ लगान के टीम की तरह एक का टोटल मत करो. टोटल का कॉलम एक जन करो, आर्ट्स का टोटल एक जन करो, कॉमर्स का टोटल अलग करो, so that we get all the answers together. आपस में डिसाइड कर लो भाई कौन किसका टोटल कर रहा है. वन पर्सन टोटल कॉलम. बोलो एनीबडी जिसका टोटल है. Okay, so somebody has total commerce. 34,32,000 is correct. एक मिनट 34,32,000 लिख देता हूँ पहले मैं. ओके, साइंस का somebody has total कितना है? 37,50,000. सबको अलग अलग आ रहा है. दिस इज अनबिलीवेबल. मुझे नहीं पता है अभी, मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ. जल्दी करो. 34 लाख कितना है? 34 lakhs. हाँ ये सही है. 34,62,764. 20 lakhs 630. ओके, ये तीनों का टोटल कर दो.
64. This is correct. 34, 62, 764. चलो, that is end of requirement part. नहीं, A part में. Now we can calculate cost per student. चलो, take right fast. अभी मैकेनिकल है. पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ. अच्छा, टोटल कॉलम का टोटल कितना है? एटी. नो, कितना? 89 lakhs. करेक्ट. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर स्टूडेंट per annum for all three streams. So we have already calculated total cost per annum. आर्ट्स का 20 lakhs 87,636, कॉमर्स का 34,32,000 एंड साइंस का 34,62,764. नेक्स्ट डिनोमिनेटर विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 120, 360, 180. So cost per student per annum is 1 divided by 2. 20 lakhs 87,636 divided by 120 is rupees 17.397. 9533 is correct. Yes, just check यहाँ पे कितना. 19,238. 19,238. चलो, रिक्वायरमेंट पार्ट बी में आ जाओ. रिक्वायरमेंट पार्ट बी में बोला है, इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक यूनिफॉर्म फी ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ईच स्टूडेंट. मतलब आर्ट्स रहेगा, साइंस रहेगा, कॉमर्स रहेगा. 1,000 रुपीज पर मंथ. अगर 1,000 रुपीज पर मंथ है तो 12 मंथ्स का कितना हुआ? 12,000. तो कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी. राइट डाउन. स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. Serial number 1,
fees per student per annum. 1000 rupees क्या है? Fees what? Per student per what? Per month. We want per annum. So 1000 rupees should be multiplied by 1000 per month into 12. So whether it is arts, commerce और साइंस, फीस आएगा 12,000. फीस में से वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट? अगर मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, जो अभी अभी हमने ऊपर ढूंढा, आर्ट्स का कितना था? 17,397. So serial number 3 will be profit or loss per student per annum, which is 1 minus 2. So arts में there is a loss of 5397. कॉमर्स में प्रॉफिट है 2467 per student. No, this is per student, and here it is loss of 7238. This should be multiplied by what? Number of students 120, 360, 180. So you will get profit or loss. Multiply करो. Five three nine seven into 120 का लॉस है 2467 into 360, 8,88,120 का प्रॉफिट, 13,02,840 का लॉस. ये तीनों का टोटल करो तो टोटल लॉस मिलेगा 10 lakhs 62,360. सी पार्ट में they are asking you to calculate the fees if the college decides to take profit of 10% on cost. तो हम लोग ने कॉस्ट ढूंढा हुआ है, उसमें हम फीस डिसाइड करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ फी टू बी चार्ज्ड, calculation of fee to be charged from students of all three streams. Same table. So arts, commerce, science. Standard 11, 12. Serial number 1 लिखो.
कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। चलो पर स्टूडेंट पर एनम का कॉस्ट मिला है हम लोग को 17,397, 9,533 एंड 19,238। इसके ऊपर कॉलेज को प्रॉफिट कितना चाहिए? यस, सो प्रॉफिट इज 10% इंटू सीरियल नंबर 1740, 953 एंड 1924, 19,238 प्रॉफिट। सो 1+2 करेंगे तो मिलेगा फीस पर स्टूडेंट per annum. Here we are calculating fees per student per annum. चलो ऐड करो। बोलो कितना? 17,397 plus 1740, 19,137, 10,486, 21. Okay, we are also calculating fees per student per month. Fees per student per month. Just divide serial number 3 by 12. 874 यहाँ पे आएगा। 1595 17। ओके, सो विद दिस ये सम खत्म हो गया। बाकी का चैप्टर तुम्हारे रिजल्ट के बाद